हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी चैनल टेक लॉयर्स पे। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। सो हमारे पास में ये सारे राइट्स है: परफेक्ट, इनपरफेक्ट राइट, पॉजिटिव, नेगेटिव राइट, राइट इन रेम, राइट इन पर्सोना, राइट इन प्रोप्रिया, राइट इन एलिना, प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट, and proprietary and personal right, legal and equitable right, vested and contingent right, public and private right, primary and secondary right, natural right, moral right, fundamental right, constitutional right, civil right, political right, economical right, human right, corporeal and incorporeal right. So हम लोग चलिए शुरू करते हैं. Perfect and imperfect right. So perfect rights are the protected and recognized by the law, and the suit can be instituted in the court against the wrongdoer for the breach of it. For example, A has taken the loan from B. B has duty to pay the loan, and he has the perfect right to claim the loan amount. If B failed to pay, then A has right to file the suit in the court. Imperfect right are those rights which are neither recognized nor protected by the law. Example, if the loan become time barred, then he can claim his money back, but it cannot enforce by the law. Like किसी ने किसी से लोन लिया है तो वहाँ पे टाइम बार्ड अगर आ जाता है, लाइक लोन लेने के बाद में आपके यहाँ पे लिमिटेशन थी कि लोन लेने के बाद साल के अंदर लिया, जैसे सपोज हम लोग बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की. सो वहाँ पे एक नियम है, रूल है कि आपको विद इन ए मंथ आपको नोटिस फाइल करना है, केस फाइल करना है. 3 मंथ का वहाँ पे रूल है. सो द सेम थिंग इज देयर, लाइक टाइम बार्ड हो गया, आप पैसे मांग सकते हैं बट यू कांट फाइल ए सूट फॉर द मनी रिकवरी. ओके, सो द सेम थिंग इज हेयर कि इनपरफेक्ट राइट वो राइट होते हैं जहाँ पे वो राइट तो हैं बट आप उनके लिए वो लाइक लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किए जा सकते. अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट. पॉजिटिव राइट की बात करें, पॉजिटिव राइट इज द राइट व्हेन सम action need to be done by the person who is corresponding duty. The person on whom the duty is lie must perform some positive act. Like हम लोग बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, अगर जैसे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो एक पॉजिटिव ड्यूटी इम्पोज करता है सामने वाले के ऊपर. एंड द नेगेटिव राइट आर द राइट विच ओमिट द पर्सन from performing certain act. Negative right corresponding to negative duty. The person on whom such duty is imposed is restrained from performing certain act. So negative right में एक negative duty is impose होती है, like स्टे जैसे कोई लेके आता है, या फिर negative right का आप और एग्जांपल देख सकते हैं कि नेगेटिव राइट में कि अगर कोई पर्सन है तो उसके ऊपर ऐसी ड्यूटी इम्पोज करते हैं लाइक कि वो एक्ट ना करे. ओके, द पर्सन इज नेगेटिव ड्यूटी, हम लोग उससे वो एक्ट ही ना करें वो, तो उसके लिए फिर यहाँ पे नेगेटिव राइट हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टे लेके आना है, कि कोई आपके घर तोड़ने आ रहा है तो आप उसको वो आपका घर ना तोड़े, राइट. तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे. अब राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना. सो राइट इन रेम में क्या होता है, right in name like right against the world, and right in persona like personal. The right in realm is right available against the society at large. For example, a crime committed under IPC because it is a crime committed against the state. Okay, so right against the world होता है, like अगर हम बात कर रहे right in persona, राइट इन रेम इन राइट इन पर्सोना. एंड राइट इन पर्सोना क्या होता है, राइट इन पर्सोना मीन्स राइट दैट इज अवेलेबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल. किसी इंडिविजुअल का राइट होता है. लाइक एग्जांपल, ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी फ्रॉम द परफॉर्म द एक्ट फाइल the suit against the breaching party. Right in persona is the temporarily in the nature which can be converted into right in rem. Right in rem is परमानेंट इन नेचर. सो आप समझ गए राइट इन रैम और राइट इन पर्सोना क्या होता है. राइट इन रैम में क्या होता है कि इट्स राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, एंड राइट इन पर्सोना इज योर पर्सनल राइट. ओके, एंड अब प्रिंसिपल एंड एसेसरी राइट. सो द प्रिंसिपल राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट. दे आर द बेसिक राइट दैट इज वेस्टेड ऑन इन इंडिविजुअल. और अगर बात करते हैं हम लोग एसेसरी राइट की, द एसेसरी राइट इज द कंसेक्चुअल or incidental right. They are not important but they are ostensible on the basic right.
जो आपके ये होते हैं प्रिंसिपल राइट आर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एंड जो अदर राइट है वो आपके प्रिंसिपल राइट है ना, हाँ। सो इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल राइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट राइट होते हैं, बट जो एसेसरीज राइट होते हैं वो उसके लाइक कंसिक्वेंसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक अगर आपका सपोज मैं बात करूं कि जैसे कि आपका राइट है कि कोई आपको चांटा ना मारे, लेकिन अगर किसी ने आपको चांटा मार दिया तो फिर आपका उस चांटे मारने से एक दूसरा राइट अराइज होगा कि आप है ना उसको पनिश कराए या फिर आप कंपेंसेशन के लिए कंपनसेशन डिमांड करें, तो एक राइट जो उस राइट की वजह से अराइज हुआ है। एंड proprietary and personal right. So the personal right are the right to respect the owner of the right. The personal right are no economical value and its right is related to the personal status or well-being. Example, the right to live with the dignity, the right to freedom of speech and expression. तो ये personal right है। और अगर आप proprietary right की बात करें तो proprietary right is given a respect of the owner of the property. The right are the rights which have some monetary value or economical value and constitute the estate on the person. Example, patent right, right of land, debt, etc. So proprietary right में आपकी लाइक यहाँ पे monetary rights होते हैं ये, और personal right आपके लाइक right to freedom और right to freedom of expression, life and liberty, ये सारे आपके personal right होते हैं। Right in Propria and right in aliena. सो राइट इन प्रोप्रिया एंड राइट इन एलिनिया की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो राइट इन एलिनिया इज द राइट अवेलेबल अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। राइट इन एलिनिया मतलब एग्जांपल, द राइट इज ऑफ easement, it is a result of the jurisprudence concept of dominate the heritage and servient heritage. ओके इसकी भी बात कर लेते हैं, और एक और नेक्स्ट पॉइंट है उसकी भी बात कर लेते हैं, अभी दोनों को बता दूं। एंड राइट इन Propria is a right available in respect of one own property. It is result of absolute ownership. It is the result of the jurisprudence concept of ownership. So जो right of प्रोपीरिया है वो आपका ओनरशिप का राइट होता है, लाइक यहाँ पे आपकी ओनरशिप है। बट जो राइट टू एलिना है, लाइक आपने किसी के पास में अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, सो मॉर्गेज करने के बाद में आपका कुछ राइट अराइज हुआ है, लाइक उसमें आपका फिर कुछ राइट बन गया, उस प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट है। सो वो जो राइट आपके वो राइट इन एलिना है, और जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, जो आपकी प्रॉपर्टी का ओनरशिप का राइट है वो राइट इन प्रोपीरिया। And corporeal or incorporeal right, both the right are the protected by the law. The corporeal right is the right over tangible object or material object. So जो आपके corporeal right होते हैं वो tangible object और material object के ऊपर होते हैं, और corporeal right having the right over the object which can be seen, touch and perceived. Example, I purchase a watch, the watch has physically existence, so I have the corporeal right over the it. And incorporeal right is the right over the object which cannot be seen or touched. Example, right to reputation. ओके सो जो इनकॉर्पोरेट राइट होते हैं उनको अनटचेबल होते हैं, जिनको टच नहीं किया जाता, रेपुटेशन की जैसे बात करते हैं, और जो आपकी जैसे मूवेबल प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं वो आपकी कॉर्पोरेट राइट होते हैं। लीगल एंड इक्विटेबल राइट। अब लीगल राइट क्या होते हैं? लीगल राइट आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉमन लॉ, लाइक कोर्ट ऑफ द इंग्लैंड कॉमन लॉ डिपेंड ऑन द यूसेज ऑफ एंड कस्टम, यूसेज एंड कस्टम। सो जो लीगल राइट होते हैं वो आपके यूसेज एंड कस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो लॉ के द्वारा, कॉमन लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। एंड इक्विटेबल राइट आर द प्रोटेक्टेड बाय द इक्विटी कोर्ट और कोर्ट ऑफ चांसलर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सिस, वो गुड कंसाइज। अब बात करें हम राइट एंड इक्वल, लीगल एंड इक्विटेबल राइट, तो यहाँ पे यूज होता नहीं है वैसे इक्विटेबल राइट, बट इट्स ओके। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट राइट। अब पब्लिक राइट की बात करें, द पब्लिक राइट इज अ राइट विच इज एक्सरसाइज बाय द स्टेट। एग्जाम्पल, राइट टू वोट, राइट टू यूज रोड एक्सेट्रा। एंड द प्राइवेट राइट इज एक्सरसाइज बाय द इंडिविजुअल फॉर द पर्सनल बेनिफिट। एग्जाम्पल, लाइक राइट टू स्लीप, राइट टू ईट, राइट टू क्लीन वाटर। And primary and secondary right. The primary is the important and very basic right. This right is ipso facto. These rights are independent in nature. This has the binding force. They are right in rem. For example, like the right of reputation. If the right are infringed, in such case, a person can approach to the court of law. A legal remedy is available against such right in form of compensation or impounding or penalty or imprisonment. And secondary right are the resulting right. They are supporting right of primary right. They are right in persona which result from some wrongdoing.
एग्जाम्पल इट्स अराइज व्हेन देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइमरी राइट। राइट, यहाँ पे बात कर लें, प्राइमरी राइट होते हैं डायरेक्ट राइट्स जो आपके राइट बनते हैं, लाइक आपके अगर कोई कॉपीराइट का आपका राइट है, आपने कुछ कॉपीराइट कराया हुआ है तो आपको उस पर रॉयल्टी मिलेगी। बट इफ समबडी इज इन्फ्रिंज दैट राइट देन यू आर गोइंग टू क्लेम फॉर द कंपनसेशन, और यू कैन से लाइक दिस पर्सन शुड बी पनिश्ड। सो जो सेकेंडरी राइट्स होते हैं वो प्राइमरी राइट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, अगर प्राइमरी राइट डिपेंड होगा तो ही सेकेंडरी राइट आएगा। एंड नेचुरल राइट को हम बोलेंगे, मैनी जूरिस्ट आर द ओपिनियन नेचुरल राइट्स आर इनहेरिट फ्रॉम द नेचर, such as right to life, right to liberty, property. They believe that natural rights are part of human nature and reason. But David Hume consider natural right and natural law and natural rights are unreal metaphysical phenomena. So उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि नेचुरल राइट नेचुरल नहीं है, ये इमेजनरी है, और बेंथम ने भी बोला है कि नेचुरल राइट इमेजनरी है। इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा बात नहीं करते, यही नेचुरल राइट के बारे में लाइक जो बेंथम ने अपने स्कूल में बोला है कि वो इमेजनरी है, और डेविड ने भी जो डेविड हमें है उन्होंने भी कहा कि जो मेटाफिजिकल फिनोमिना है दैट्स ऑल आर अनरियल। moral rights, so moral rights are the based upon the human consciousness. They are supported by the moral force of human mind. They are based on the human sense of goodness and justice. Moral rights are personal rights and show a relationship between the creator and his work. Okay, and fundamental right, so these rights are given under Part 3 of the Constitution of India, Article 12 to 35. हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, लाइक आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, आपका एक्सप्लोटेशन, राइट टू रिलीजन, ऑल दिस कम्स आर लाइक राइट टू रेमेडी, जुडिशियल रेमेडी। सो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट हैं। अब आपको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट, दीज राइट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल राइट टू वोट आर्टिकल 326, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300। सो जो राइट फंडामेंटल राइट नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम द दोज राइट विच राइट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज आपके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एंड राइट टू लिवलीहुड, राइट। अब सिविल राइट की बात करें, सो ओवर कंट्री Constitution and federal law contain criminal protection that form a foundation of our inclusive society. The right to be free from discrimination, the freedom of worship as we choose, the right to vote in our elected representative, and the protection of the dual process, the right to privacy. All these are the civil rights. Okay, these civil rights are आपके। And political rights, political rights refer to the individual's ability to the participation in the civil and political life of the society and the state without fear of discrimination or representation, and it's tie closely to the citizenship status. So political right आपके citizenship के साथ में tie up रहते ही हैं। So आप कोई मतलब बिना discrimination के you can come to the society and you can like fight in election. So ये सब चीज़ें without discrimination you can do it. And economical right, economical right क्या होते हैं, cyclo economical right are provided protection for the dignity, freedom and well-being of individual by the guaranteeing state supported entitlement to education, public health care, housing and living wage, decent working condition and other social goods. Human rights are right inherent to all human beings regardless of race, sex, nationality, ethnicality, language, religion or other status. Human rights include the right to life and the liberty, freedom from the slavery and torture, freedom of the opinion and expression, and the right to work and education and many more. So human rights में हम लोगों के ये सारे rights आ जाते हैं। Thank you for the watching the video. Like, comment, share and subscribe the channel.